ठीक है, तुम करो, प्लीज स्टार्ट। Good everybody, should we begin? Yes, Anaya, begin. Okay. Please confirm my audio reception, whether am I audible or not. Yes. Okay. So, good morning, everybody. Welcome to the last and final day of the international workshop on research methodology for faculties and research scholars. According to Neil Armstrong, research is creating new knowledge. With this, we come to the end of a very fruitful workshop with us today. And today we have the first speaker, Professor Dr. Bhuban Chandra Mahapatra. I request my colleague Mukul to please introduce him to the symposium. Very greetings of the day. So coming forth, we have the first speaker, Professor Dr. Bhuban Chandra Mahapatra. He has been a professor in education from Bhopal. He had earned his bachelor's degree in the discipline of education in 1989 from Utkal University, BBSI, Orissa, India. In the year 1991, he had earned MEd degree from DAV, Indore, India, with specialization of educational technology and computer education. He has written 22 plus research papers and has been associated with activities resolving the problem of India education system. And with more than 5 dozen of research papers, articles, and 16 books available in international market, we have amongst us Professor Dr. Bhuban Chandra, who will going to be address the issue of advanced techniques in social science research. Sir, you're not audible. Hello. Yes, sir, you are audible now. Actually, this is called टेक्नो एक्विंटेंसी एंड टेक्नो बैरियर. ये दोनों जो वर्ड्स है ये समसामयिक है. जैसे हमने हार्डवेयर अप्रोच हो कि सॉफ्टवेयर अप्रोच हो, हमारा कभी किसी चीजों में परफेक्शन नहीं है तो वो एक क्रिएट होता है. ऐसे अभी मैं हमारी प्लेटफॉर्म जो है मैंने सेटअप किया था जो लैपटॉप के थ्रू में इसको प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन फॉर द टाइमिंग वो इसके ऑडियो काम नहीं कर रहा है. जब ऑडियो काम नहीं करता है तो इसको मुश्किल पड़ता है, तो मुझे दोनों प्लेटफॉर्म का यूज इकट्ठी करना पड़ रहा है. क्यों ना मुझे प्रेजेंटेशन के लिए भी जरूरत है लैपटॉप और ऑडियो के लिए जरूरत है अपना मोबाइल एंड्रॉयड फोन. थोड़ा आप लोग तो सभी काफी अनुभवी है और मेनली रिसर्च स्कॉलर है और प्लस आपके सबसे ज्यादा जो है फैकल्टी 48 से नियर अबाउट पार्टिसिपेंट है. तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के आखिरी दिन में जैसे सभी लोग पढ़ा के गए वो आखिरी में हम ही हैं. और जैसे कहते हैं ना सारी नॉलेज जैसे बढ़ते जाता है सभी लोग एसोसिएटेड होते रहते हैं, ये परफेक्शन सब नॉलेज आता है. और सबसे बड़ा हमारी डिमेरिट्स है, मेरिट्स कहिए डिमेरिट्स कहिए, सोशल साइंस में रिसर्च जो है वो इतना आसान नहीं है. आप लोगों को पता होगा, इफ आई एम सर्चिंग ब्लैक कैट इन द डार्क रूम, मैंने अंधेरे के घर में अंधेरे के रूम में एक काले बिल्ली को ढूंढ रहा हूं. इसके लिए मुझे कौन सा तकनीक अपनाना पड़ेगा? हर लोग चाहते हैं रिसर्च इज नथिंग, इट इज अ फाइनेस्ट नॉलेज, यू आर सर्च इट अगेन एंड अगेन, प्योरिफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट. सोशल साइंस रिसर्च में
सबसे ज्यादा हमारे डिफिकल्टीज है हमारी टाइम बाउंड रिसर्च होता है और टाइम फ्रैक्शन के साथ वो वैलिडेट नहीं कर पाता है। जैसे मैं अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछूं तो कल कुछ समय के बाद वही क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन दैट क्वेश्चंस बिकम दैट्स अनदर आंसर। सो आंसर एंड क्वेश्चन बोथ आर डिसिमिलर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारी जो रिसर्च है सोशल साइंस में ये सब जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स होता है जिसमें रिसर्च में माना जाता है हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिफिकल्टीज हमारा सोशल साइंस में हम रिसर्च जो करते हैं हमारा टेक्निक क्या है, हम रिसर्च का कौन सा स्टेप में जा रहे हैं, क्या हम इसीलिए आई हैव ऑलरेडी टेकन द थिंग्स विद द 3 days एडवांस टेक्निक इन सोशल साइंस रिसर्च। एडवांस मीन्स हमारी जो टेक्निक है वो नया है, एडवांस है। और एडवांस्ड इन सोशल साइंस रिसर्च मतलब सोशल साइंस रिसर्च में डिफरेंट टाइप, सोशल साइंस में जैसे ह्यूमैनिटीज भी आते हैं और सोशल साइंस में साइंस से अलावा जो भी रहते हैं जो सोशल साइंस से माना है। और वो जो रिसर्च होता है वो रिसर्च में हम किस टाइप के वेरिएबल्स को मापने जा रहे हैं, कौन सा साइंटिफिक वे अपना रहे हैं, जो हमारी फाइंडिंग्स जो है इट इज ऑथेंटिक, इट इज एक्सेप्टेबल, it is socially acceptable in this sense. When we are going to say something now, how far it is applicable और कितने दिन तक ये रहेगा, कितने समय तक रहेगा, हमको बार बार क्यों रिसर्च करना। हम जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं तो हमारी सबसे ज्यादा रहता है कि 1600 ख्रीष्टाब्द न्यूटन ने बनाया था 3 लॉ और हमारी ये लॉ चल रहा है। और लॉ, फेनोमेना, पोस्टुलेट्स, ये जो सभी चीज है वो धीरे धीरे इसके परिभाषा जो रहता है वो बदलता रहता है। क्यों ना, लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, फेनोमेना दैट कैन बी और पोस्टुलेट दैट कैन बी, ये जो चीज हमारी साइंस में चलता है और जिसमें हमारे सोशल साइंस रिसर्च में वी आर अनेबल टू रीच दैट साइंटिफिक, विदाउट साइंटिफिक वे वी कैन रीच। इसमें 3 पहलू है। एक तो आप पहला जो स्टेप है आपने रिसर्च के प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएशंस करना पड़ता है और रिसर्च के बारे में जानना है कौन सा हमने मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद होता है हमारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो थोड़ा डिफिकल्टी से होता है। क्यों ना कई सारे लोगों को स्टैटिस्टिक्स, कौन सा स्टैटिस्टिक्स कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, वो किस टाइप का हमने स्केलिंग किए हैं। हमारी जो मेजरमेंट है, जो इवैल्यूएशन होता है, हमारा स्टैंडर्डाइज टूल है कि नहीं, हमने टीचर मेड टूल बनाया कि हमारी ऐसे क्वेश्चनियर के थ्रू में बनाया गया कि परसेप्शन बेसिस में किया गया है कि हमारी जो सैंपल साइज है उसका सबसे बड़ा इफेक्ट रहता है, हमने कितने सैंपल ले रहे हैं और हमारी रिसर्च फाइंडिंग हम किसके लिए कर रहे हैं, सबसे बड़ा यही डिफिकल्ट है। इससे पहले कितने लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च किए हैं और इनका एसोसिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, ये 2 चीज कर कितने लोगों का फाइंडिंग्स हमारे फाइंडिंग के साथ बराबरी है और हमारी कितने फाइंडिंग्स कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, हमारी फाइंडिंग्स क्या आ रहा है, क्यों ऐसे आ रहा है, इसके लॉजिकल वैलिडेशन आर्गुमेंट वो आपको करना इसलिए जरूरी है, नहीं तो आप ट्रूथ को एस्टैब्लिश कर नहीं पाएंगे। सबसे डिफिकल्ट हमारी इस बात में आता है जब हम सोशल साइंस में रिसर्च के बारे में कोई चीज पता लगाते हैं, बताते हैं। इसे हमारी पहला स्टेप में हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिसर्च जो कर रहे हैं क्या इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो मेथोडोलॉजिकल इश्यूज है और आप जो रिसर्च कर रहे हैं आपको पता है क्या क्या करना चाहते हैं। फिर थियोरी बैकग्राउंड्स ऑफ द रिसर्च, वेदर इट इज साइंटिफिक और इट इज सोशल साइंस। इसके बाद और ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस ऑफ थियोरी, ये सबसे बड़ा मोटे तौर पर कहा जाता है साइंटिफिक वे में रिसर्च करने के लिए ये पैरामीटर्स आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होना चाहिए और कौन सा हमने रिसर्च प्रॉब्लम्स लिए हैं और इसी प्रॉब्लम्स के अंदर कितने वेरिएबल्स है और कौन सा वेरिएबल्स के साथ किसके साथ रिलेशन है और ये सारी जो टेक्निक, ये सब चीजों में हम कितने दूर तक
साइंटिफिक वे में करने के लिए क्या क्या चीज का हेल्प लिए है। जैसे हमने क्वेश्चनियर के थ्रू में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चनियर हमारे पास कितना है, हम कितने लोगों को पूछ सकते हैं, और वो जो रेस्पॉन्स देने वाले और हमारे क्वेश्चन देने पूछने के अंदर ये व्यवधान क्या है, ये लोगों का जो हमने जिस समय जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो पर्पस सेटिस्फाइड हो रहा है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई गवर्नमेंट डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट के जैसे ऑफिसर्स देना नहीं चाहता है इंफॉर्मेशन, और वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है एज ए रिसर्चर मुझे किस स्थिति में रह के इस चीज को कलेक्ट, आइदर हमको पार्टिसिपेट करके लेना, नॉन पार्टिसिपेट करके लेना, क्या टेक्निक हमने अपनाया है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। पहला राउंड में तो हमारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को इन्फ्लुएंस करने वाले कितने सारी वेरिएबल्स है, क्या हम मेजर कर रहे हैं, वो जो मेजरमेंट कर रहे हैं इसके लिए कौन सा स्टैटिस्टिक्स हम यूज कर रहे हैं, कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, ये साइंटिफिक वे में करवाने के लिए एडवांस टेक्निक का हमारी जो रिसर्च है। मैंने 1993 में पीएचडी इंदौर यूनिवर्सिटी से किया था, तो मुझे इस चीज को सीखने के लिए इसलिए याद है हमारी जो टीचर है यही चीज को ज्यादा फोकस देते थे, जब तक आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आपने कभी रिसर्च के सक्सेस नहीं हो सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, और आपको इंटरनेशनल लेवल में रिसर्च एक्सेप्टेंस करवाने के लिए ये चीज जरूरी है। और आपके पास सफिशिएंट पहले तो नॉलेज होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं पीएचडी की मास्टर डिग्री, कोई भी रिसर्च वर्क में डिलीट तक भी लोग कर रहे हैं, तो इस चीजों में आपके परफेक्शन ऑफ नॉलेज, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज को परफेक्शन करने के लिए आपके किस लेवल का नॉलेज है, आइदर इट इज द नॉलेज इन द बेस ऑफ योर मेमोरी, बेस ऑफ योर मेमोराइजेशन, और इट इज इन एप्लीकेशन स्टेज, यू हैव मास्टरी लेवल ऑफ लर्निंग, वेयर यूर स्टैंड। पहले तो आपके पास जब तक एनालिटिकल पावर नहीं होगा, सिंथेटिक पावर नहीं होगा, इवैल्यूएटिव पावर नहीं होगा, आपने कभी किसी चीज का निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कई जगह में पढ़ा था, वी आर राइट ओनली फॉर दैट, डिबोनो नाम के बहुत बड़े क्रिएटिविटी के थिंकर्स है, जिसने एक किताब लिखे थे छोटे, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। वो किताब में बाकायदा फर्स्ट पेज में था, एक आदमी खड़े हैं और दोनों हाथ में, वो 26 रुपया इस किताब के नाम, कीमत बहुत कम है लेकिन इंडिया में अवेलेबल बहुत कम जगह में होगा। वो किताब में बहुत कम पेजेस का है, लेकिन एक एक सेंटेंस जो है इतना वैल्यूएबल है, वो जो रिसर्च करते हैं, जो पढ़ते हैं, उन्होंने क्रिएटिविटी के बारे में पूछा है। एक आदमी फर्स्ट पेज में खड़ा है, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, किताब के नाम है आई एम राइट यू आर रॉन्ग, मैं राइट इसीलिए हूं मेरे पास लॉजिक है, यू आर रॉन्ग ओनली फॉर दैट यू हैव नो लॉजिक। और आपने जब लॉजिक एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो आप रॉन्ग ही हो जाएंगे। तो थियोरी बिल्डिंग के तरफ आपको जाने के लिए और ट्रूथ एस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ आपको आर्गुमेंट होना चाहिए। उन्होंने एक जो पोस्टर का फर्स्ट पेज में था, एक आदमी खड़ा है, आप एक हाथ में मुर्गे दूसरे हाथ में अंडे, व्हिच वन इज फर्स्ट, वो नीचे लिखा है, और इसमें आपको पता चलेगा जो आप कौन सा लॉजिक दे रहे हैं, जो अंडे पहले है कि मुर्गी पहले है। ये तो साधारण बात है, जैसे कहते हैं ना एक गिलास में पानी रहता है, आधा है तो हम कहते हैं ये आधा और भरा हुआ है, और किसी ने कहता है नहीं आधा खाली है। ऐसे ही वे ऑफ विजन, इसको कहते हैं विजनरी, दैट डिपेंड ऑन योर रिसर्चर। जो भी रिसर्च करता है, जो भी स्टडी करता है, तो आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। और वो जो नॉलेज हमने एक्विजिशन करेंगे, नॉलेज जो गैदरिंग करेंगे, जैसे हम थोड़े से और आगे बढ़ेंगे जिसमें बताते हैं इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारा कलेक्ट करने जिसके माध्यम से कलेक्ट करते हैं वो सही है कि नहीं, वेदर वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड टूल्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक और इट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन पैरामीट्रिक, और ये दोनों से तो अलावा कोई नहीं है। और आपका कौन सा स्केल है यूज कर रहे हैं, वो स्केलिंग सिस्टम जो है, वो स्केलिंग में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस है। हमने नॉमिनल स्केल यूज कर रहे हैं, हमने रेशियो स्केल यूज कर रहे हैं, हमने जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो हमने कौन सा टूल्स यूज करेंगे, और जैसे एफपीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं, किस एमकेएस सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो ये जो सब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, और इसका नेक्स्ट स्टेप में
हमने इसको वैल्यूएशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फील्ड स्टडी करने गए, आंखों में देखा हुआ चीज और उसको हमने कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में ला सकते हैं, और कैसे हमने बहुत सारे लोगों को पूछ के हम निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं ना, व्हेन सैंपल साइज इंक्रीजेस एरर रेट डिक्रीजेस। इसी के मतलब आपने जो कहते हैं ना, एक कंसेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कोई भी वेरिएबल के अगेंस्ट में कितने लोग कह रहे हैं, वन बाय समथिंग, वन और क्या होता है, जैसे 1000 लोगों को पूछो तो वो फ्रैक्शन 1/999 हो जाता है। जैसे वन वेरिएबल्स को मेजर कर रहे हैं तो 1000 लोगों को पूछा तो वन के एग्नेस्ट में, क्यों ना वेरिएबल यहाँ वन है, एग्नेस्ट में एक कम हो जाएगा, 1000 से 999 हो जाता है। तो ये नंबर अब जैसे फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, एरर रेट घटते जाएगा। इसीलिए कहते हैं व्हेन सैंपल साइज इंक्रीजेस एट द टाइम एरर रेट डिक्रीजेस। वो हमारी एडवांस टेक्निक क्या है, सबसे बड़ा हमने जो काम कर रहे हैं रिसर्च में, हमारी क्या हेल्प मिल सकता है, एडवांस क्या है और टेक्निक क्या है। टेक्निक, टैक्टिक्स, टेक्नोलॉजी और टेक्निक का यूज करना, इसके कहते हैं ना स्टैटिस्टिकल टेक्निक, कहते हैं ना डाटा एनालिसिस टेक्निक। वो टेक्निक जो हमने यूज करते हैं इसमें कितना परफेक्शन होता है। और हमेशा हर रिसर्चर चाहते हैं आपका सबसे बढ़िया जो क्या है रिजल्ट, वो आउटपुट एक्सेप्टेबल होना चाहिए और सोशली इट इज एक्सेप्टेबल। ये एक आदमी के लिए हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हमारी जो रिसर्च वर्क है फंडामेंटली हमारे कितना समाज के काम में, हित में आ रहा है। तो इसीलिए इन्फ्लुएंस ऑफ सैंपल साइज पहला ये एक देखते हैं, जिसको स्टेप 2 में आते हैं। और कैटेगोरिकल डाटा, जो हमने डाटा लिए हैं वो डाटा किस टाइप के डाटा है, वो डाटा पैरामीट्रिक फॉर्म में है कि नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, और इसके डाटा का जैसे एसिमुलेशन किया जाता है, सिमिलैरिटी निकाला जाता है, डिसिमिलैरिटी निकाला जाता है। इसके लिए एक्सप्लोरिंग डाटा, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, इसको कहते हैं एक्सप्लोरिंग द डाटा। हमने 1000 लोगों के पूछे लेकिन लाखों लोगों के लिए हमने ये निष्कर्ष निकाला। तो लाखों लोगों को निकालने के लिए हमको एक्सप्लोर करना पड़ता है डाटा, डाटा का एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस जिसको कहते हैं। 100 को पूछ के हमारे 1000 लोगों को कैसे किया जा सकता है, प्रोजेक्ट टेक्निक जिसको कहते हैं, प्रोजेक्शन मेथड्स जिसको कहते हैं। और एनोवा लगाएं, एनकोवा लगाएं, टी टेस्ट लगाएं, बाई वेरिएबल टू प्लेट एनालिसिस करें, डिस्क्रिमिनेटिंग एनालिसिस करें, क्लस्टर एनालिसिस करें, फैक्टोरियल एनालिसिस करें, और डिस्क्रिमिनेटिव एनालिसिस भी करें, और रिग्रेशन एनालिसिस करें। ये सारी एनालिसिस के डिफरेंस जो है वो डाटा के ऊपर निर्भर करता है। हमने काई स्क्वायर यूज करें, टी टेस्ट यूज करें, आर वैल्यू देखें, और बाइवेरिएंट एनालिसिस करें, और डिस्क्रिमिनेटिंग एनालिसिस में हमने काई स्क्वायर कॉन्टिजेंसी टेबल एनालिसिस करें, कि मीन वेरिएशन का एनालिसिस करें, कि ग्राफिकल एनालिसिस का वेरिएशन के एनालिसिस करें। ये सभी जो है ये एक्सपर्टाइज, और आपका जो जब तक ये कंटेंट्स नॉलेज ये सारी चीज के ऊपर मास्टरी नहीं होगा तो आपका रिसर्च फाइंडिंग वैलिड माना नहीं जाएगा। इसीलिए हमको हमेशा टेक्निक का यूज किया जाता है। जैसे सभी लोगों को भी पता होगा, एक SPSS नेचुरली लोगों ने यूज करते हैं, जो मेरे लाइफ में मैं पहला इंडियन हूं जो SPSS US से ट्रेंड हूँ 2000 मसीहा में। जब उसी समय कंप्यूटर नहीं, BBC माइक्रो था हमारी, जब PhD में 1989-90 में शुरू किया था, उसी समय BBC माइक्रो आया था, जिसमें मेमोरी कार्ड भी नहीं है। आजकल तो एंड्रॉइड में हम लोग सब इंफॉर्मेशन गैदर करें, सबके पास टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गया है। जो क्या कहते हैं ना, बेस्ट टीचर नॉकिंग एट योर डोर स्टेप, अच्छे सब गूगल के थ्रू में अवेलेबल हो जाता है, इंफॉर्मेशन कहाँ भी छुप नहीं रहा है, हर चीजों में ट्रांसपेरेंसी आ रहा है। तो हमारी उसी समय का मुझे याद है, जो हमको डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क नहीं था जिस कंप्यूटर में, उस कंप्यूटर में हम लोगों ने काम किए। तो फैक्टोरियल एनालिसिस करने के बाद की बात है, और जो सॉफ्टवेयर है हमको खुद को बनाना पड़ता था, जिससे कहते हैं ना, आपने SPSS जो अवेलेबल है आज के तारीख में हर जगह में, एक तो गवर्नमेंट ऑफ जैसे रिसर्च पर्पस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में भी है, और आप खरीदने जाओगे। उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस महू में, उसमें मैंने पोस्ट डॉक्टरल फेलो था, तो US से उस चीज को लाया गया था, क्यों ना वो रिसर्च पर्पस में ही वो इंस्टीट्यूशन खोला गया है सोशल साइंस।
तो वो जो है 2-2.5 लाख रुपया सिर्फ सॉफ्टवेयर का कीमत था। नाउ इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, और तो अभी हर जगह में अवेलेबल है। तो आप इसका एडवांटेज, सिस्टेड नाम का सॉफ्टवेयर है और एमोस नाम के ही है, एमोस के थ्रू में आपने एनालिसिस कर सकते हैं और एसपीएसएस के थ्रू में कर सकते हैं। तो ये जो सब एडवांस टेक्निक आ चुका है, आप इसके, जैसे मैंने कौन सा दवाई चाहिए, आपको फीवर हुआ है, मैं फीवर को बंद करने, कम करने के लिए मैं कोई पेट के बीमारी का दवाई नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए नहीं दे सकता हूँ, क्यों ना, पेट के बीमारी और पर्पस अलग है, मेरे सिर पे दर्द हो रहा है, सिर के दर्द होने का एक अलग पर्पस है। तो हमारी डायग्नोसिस सबसे बड़ा रोड़ा है। हमको पता नहीं है हमने टी टेस्ट कहाँ लगाएंगे, हम काई स्क्वायर कहाँ लगाएंगे, हम एफ वैल्यू एनोवा कहाँ लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेटिव एनालिसिस कहाँ लगाएंगे, क्लस्टर एनालिसिस कहाँ लगाएंगे, मीन वेरिएशन कहाँ देखेंगे, वन वे एनोवा कहाँ लगेगा, टू वे एनोवा, एनोवा और एनकोवा के अंदर फर्क क्या है। ये जो सभी हमको पहले डायग्नोसिस करना जरूरी है, जिसके बाद हमको रिसर्च में कौन सा स्टैटिस्टिक्स लगेगा ये हमको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा डिफॉल्ट है, डिमेरिट्स है, हम बिना डायग्नोसिस में किसी ने कह दिया भाई ऐसा कर लो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तो यहाँ लगेगा, ये लगेगा, लेकिन ये कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए, एविडेंस फॉर्म में। हमने जो टूल यूज किए हैं वो टूल क्या है, पैरामीट्रिक डाटा कर रहा है कि नॉन पैरामीट्रिक, यहाँ मीन वेरिएशन को कंपैरिजन किया जाएगा कि आर वैल्यू देखा जाएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और आपको जैसे मीन स्क्वायर क्यों निकाला जाता है, और ये जो सब चीज है स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। हमने क्लस्टर एनालिसिस करेंगे, और क्लस्टर बनाने के समय में हमने कितना डेवलपमेंट किए हैं, कितना फ्रैक्शन, कितने गैप के अंदर किए हैं, अब हमारी ये सब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब हमने एनालिसिस वेरिएशन जो होता है उसी में आगे हम बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा हमारी डिफिकल्टीज है, हमने स्टेप 3 में थियोरी कंस्ट्रक्शंस इन सोशल साइंसेस, नीड एंड इट्स प्रोस्पेक्ट, हमको ये थियोरी बनाना है, थियोरी टुवर्ड्स द सोशल रिफॉर्म, जैसे लर्निंग एंड नेचर ऑफ थियोरी। हमने जिस चीज को नहीं पढ़े और हम इसको दूसरों को कैसे कह सकते हैं, हमारी समाज के लिए भी कैसे काम में आए, टाइप्स ऑफ थियोरिटिकल कंस्ट्रक्शन, जो थियोरी हम बनाएंगे और सोशल साइंस में, उसमें किस टाइप का थियोरी हमारा बनना है, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ थियोरी। थियोरी बनाने के लिए आप लोग देखे हैं ना, पेटेंट साइंस में जो पेटेंट करते हैं, हमारे यहाँ थियोरी बनाना पड़ता है, और थियोरी बनाने के लिए हाउ यू चोज इट, आपका कौन सा टीम। इसके बाद हमने रिसर्च डाटा जो हमने कलेक्शन करते हैं, वो डाटा है यूनिवेरिएट है कि क्या, एक ही लाइन में जो चलते हैं लीनियर टाइप का, फिर इंटर डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी, थियोरिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ये सारी रिसर्च का सभी चीजों के ऊपर आपका मास्टरी होना चाहिए, तब आपने आपका रिसर्च प्रॉब्लम को सही ढंग से एनालिसिस, सही टेक्निक यूज कर सकते हैं। सबसे हमने वेरिएशन के अंदर वेरिएशन को कैसे देखेंगे, हमने वेरिएबल का कंपैरिजन कैसे करते हैं। इवन हमारी एक सबसे बड़ा डिमेरिट से, जहां जो चीज लगना नहीं चाहिए हम वहां स्टैटिस्टिक लगा देते हैं, वो कहते हैं हमारे रिसर्च फाइंडिंग्स तो सबसे बढ़िया है और सबसे अच्छा है, हम इसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे सोशल साइंस रिसर्च में आपने पोलराइजेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स, कितने लोगों ने कितने इसी प्रॉब्लम्स को लेके कौन कौन सा एरिया में क्या रिसर्च किए हैं, और हर रिसर्च का एक बैकग्राउंड को आपको स्टडी लगेगा। जैसे हमने जब थियोरिटिकल रिसर्च करते हैं, और कई सारी लोगों ने जिसे मेटा कॉग्निटिव रिसर्च कहते हैं, और कॉग्निटिव मतलब जो दिमाग में है, बहुत सारी रिसर्च फाइंडिंग्स को हम लेके, और मेटा मतलब मोर देन एनफ जो फाइंडिंग्स सिमिलरिटीज है, हम इसी को लाके इसके अंदर डिसिप्लिनरिटी निकालना है। आइदर द फैक्टर्स आर बिलोंगिंग टू इट्स पॉपुलेशन, और इट्स फैक्टर इज द एरिया, और इट्स टाइम, देयर इज 3 थिंग्स इफेक्टेड इन दिस वे। हमने जो रिसर्च किए हैं, हमारा रिसर्च का फाइंडिंग्स हम कितना लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं और कितने जगह में कॉन्ट्राडिक्ट, वो सबसे बड़ा डिफिकल्टीज आज के तारीख में। और फिर इसके बाद डाटा विथ वेरिएबिलिटी, एक डाटा के अंदर हमने कितने टाइप ऑफ वेरिएबल देखते हैं, और फिर डाटा किस टाइप का है, क्वालिटेटिव डाटा कि क्वांटिटेटिव डाटा,
क्वालिटेटिव डाटा हमने किस सोर्स से लाए हैं, और बिब्लियोग्राफिकल डाटा, फील्ड डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा, डेमोग्राफिक डाटा, ये सब डिफरेंट वेज ऑफ वेरिएशंस इन द डाटा। और वो डाटा जो है हमको पहले ही पता होना चाहिए whether we are doing that data is valid or not। और डाटा का सिंगुलर फॉर्म जब हम पूछेंगे तो आधा लोग तो बोल नहीं सकते हैं, क्यों ना हमारी हम बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक जो है इंटरनेशनल लेवल में जो अवेलेबल है, किसमें ना आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और जो इंडियन बुक्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बुक्स में कुछ कमियां हैं, लेकिन वो उसका यूजेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड नहीं हो जाता है। हम जितना भी कहें, हमारी भारत के बाहर क्या हम अपना लैंग्वेज को ला के पहुंचा सकते हैं? पहुंचेंगे भी तो वो लोग इसको एक्सेप्ट करें कि अपना रीजनल लैंग्वेज को, तो लैंग्वेज बिकम द बैरियर फॉर ऑल। इसीलिए हमारी जो स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है जो इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसको जानना, सुनना, इसके समझना, ये भी आपका एक परफेक्शन आना चाहिए। हम ऐसा नहीं जो कोई किसी ने लिख दिया और हम इसको मान लिया। तो डेमोग्राफिक डाटा जिसे फर्क है, इंटीग्रेटेड सेकेंडरी एंड प्राइमरी डाटा। पहले तो हमने जो सोर्स प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, ये भी दो टाइप का कैटेगरीजन है। और प्राइमरी डाटा क्वालिटेटिव डाटा है कि क्वांटिटेटिव डाटा है। और क्वालिटेटिव डाटा को जैसे हमने किसी के एज पूछे तो वो एज भी तो फ्रैक्शन में आएगा। जैसे बाय सेक्स पूछा तो वो दोनों में आता है। जैसे कास्ट पूछा वो बहुत सारी भी हो सकता है। हेल्थ पूछा, और हेल्थ में आपने डेथ के समय में कैसे हेल्थ था, बर्थ के समय में कैसे हेल्थ है, और हेल्थ का कैसे वेरिएशन होता है। और गवर्नमेंट डाटा है कि आपके आंखों देखा डाटा, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं। सारी डाटा का आपके विद इन दिस ग्रुप आपको बहुत सारी वेरिएशन मिलेगा। और जो आपको चाहिए इस चीज को आपको ऐसा एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा, और अच्छे से स्टडी करके यही डाटा हमको चाहिए, और ये क्वालिटेटिव फॉर्म है कि क्वांटिटेटिव, और इसको मेजरमेंट करने के लिए हमने कौन सा स्केल यूज करेंगे, वो कौन सा स्केल के लिए कौन सा स्टैटिस्टिक्स, ये जो है एडवांस टेक्निक में आता है। आखिरी में आप जो रिसर्च फाइंडिंग्स आता है, वो डाटा जो आपका इंफॉर्मेशन ड्रॉ होके आता है आखिरी में एनालिसिस के बाद, आइदर इट इज ग्राफिकल फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि आपने टेबुलेट फॉर्म में आप दे सकते हैं, दोनों को कंपैरिजन करके निष्कर्ष जो निकालता है। तो ये काफी जो बृहत, जिसको कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क व्हेन यू हैव इनसफिशिएंट नॉलेज। इसीलिए नॉलेज मस्ट बी, you must have that much of knowledge, you know how to do the research from the beginning। These are identifications of data variability। सारी डाटा कैसे कैसे वेरी हो सकता है, और इसको हमने स्प्रेडशीट के अंदर लाएंगे कि डाटा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे, कि फॉर्मुलेशंस ऑफ एसपीएसएस के अंदर जाके आपने, वो तो आजकल आसान हो गया है, एसपीएसएस के अंदर जाके आपने डाटा को फीड कर सकते हैं। फीड करने के अंदर ऑटोमेटिकली वो कर देते हैं। कई सारी ये सोशल साइंस रिसर्च में आपने जो यूज कर रहे हैं, मेथड जो यूज कर रहे हैं, वो मेथड जैसे सर्वे मेथड आपने यूज किए हैं, कि आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड किया। एक्सपेरिमेंटल मेथड करने के लिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होना चाहिए। सर्वे भी आप करोगे तो किस टाइप का सर्वे करोगे, ये सारी जो विद इन द वेरिएबिलिटी आपके इसके नॉलेज में होना चाहिए। जब तक आपने स्टैटिस्टिकल नॉलेज नहीं है, मेथोडोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, तो इन्फ्रेंस आपने निकाल नहीं सकते हैं। और इन्फ्रेंस नहीं निकाल पाओगे तो कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं। कंपैरिजन जब नहीं होगा तो फाइंडिंग्स का कोई मतलब नहीं। तो ये पहला तो आपके शार्पन योर एनालिटिकल स्किल एंड गेन डीप इनसाइट इनटू योर डाटा। जितने सारी इंफॉर्मेशन आपने ले रहे हैं, इसको आपका समझ में आना चाहिए। फिर यूज appropriate analytical techniques for extracting effective information। इंफॉर्मेशन तो बहुत रहता है, जो आपको जरूरत है वो आपको बेहतर आना चाहिए, उसी डाटा के अंदर आपको ड्रॉ करना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, प्लान एंड प्रेडिक्ट फॉर बेटर। इसके अलावा कुछ है क्या, बोला कर सकते हैं क्या, वो प्लान एंड प्रेडिक्ट में आ जाता है। फिर डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ different research project in different dimensions of knowledge। different dimension, different prospect में जो लोग जहां किए हैं वो सबको समराइज करके आपको लेना पड़ता है। और आप इस चीज को लाए एक ही प्लेटफॉर्म में,
और आपके पास इतना सिंथेटिक, एनालिटिक एंड इवैल्यूएटिव पावर माइंड में होना चाहिए, जिसके कारण आपने बेहतर रिसर्च कर सकते हैं। और हमारी ये सब हमेशा प्रयास रहना है, हम जो भी करते हैं इट इज एक्सेप्टेबल, वो सब दुनिया के लोग इसको एक्सेप्ट करें। हमारी रिसर्च जो है, रिसर्च फाइंडिंग्स जो है, हम हमेशा एक्सेप्टेबल होना चाहिए वो ग्लोबली। हमको ऐसे कहीं नहीं कि हमने क्लासरूम रिसर्च कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम को हम, ये सेपरेट टाइप का रिसर्च है, लेकिन हमारे हमेशा प्रयास होना चाहिए इट इज एक्सेप्टेबल। और सबसे बड़ा हमारा व्हाई डू आई नीड टू नो अबाउट डिफरेंट मेथड्स, पहला क्वेश्चन होना चाहिए। हमारे पास जैसे 2 3 4 5 7 जितना सारी मेथड है, हम सोशल साइंस में जो रिसर्च कर रहे हैं, मेथड क्या है और मेथडोलॉजी क्या है, हमने किस लेवल के बच्चों का स्टडी करना चाहते हैं, किस लोगों के लिए स्टडी कर रहे हैं, किस एरिया के लिए स्टडी कर रहे हैं। जिसे हमने मैनेजमेंट में जो करते हैं रिसर्च, उसमें पर्सपेक्टिव हाउ टू मैनेज, मैनेजमेंट में सबसे बड़ा डिमेरिट्स रहता है, मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राइंग टू मैनेज, मैनेजमेंट से इट इज अवे फ्रॉम द रियलिटी। और रिसर्च हमेशा रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, और रिसर्च में साइंटिफिक रिसर्च बनाने के लिए हमको इस चीज को शार्पन या एनालिटिकल पावर, इसके लिए हम रिसर्च करते हैं। और व्हाई डू आई नीड अबाउट डिफरेंट मेथड, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम रिसर्च कर रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको देख के हम रिसर्च कर रहे हैं। हमारी रिसर्च का ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ वर्क को आपके नॉलेज में होना जरूरी है। और मेरा सबसे बड़ा ये है, पहले तो आप मेथड और मेथडोलॉजी के अंदर आना चाहिए। मेथड जो है वो टेक्निक्स फॉर गैदरिंग एविडेंसेस, और मेथडोलॉजी क्या है, द अंडरस्टैंडिंग थियोरी एंड एनालिसिस ऑफ हाउ रिसर्च डज और शुड प्रोड्यूस, ऑफन इन्फ्लुएंस बाय डिसिप्लिन्स। ये चीज को आप मेथडोलॉजी के हिसाब से समझ लीजिए। फिर मेथड के द वेरियस वे ऑफ प्रोसीडिंग्स इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज मेथड। जो डिफरेंट वे में हम लेते हैं इंफॉर्मेशन, वो मेथड में आता है, और जिस प्रक्रिया के थ्रू में हम लेते हैं इसको मेथडोलॉजी कहते हैं। तो सबसे एपिस्टेमोलॉजी जो कहते हैं नॉलेज का, सबसे मेथड एंड मेथडोलॉजी, ये ऑल आर कमिंग टुगेदर टू नॉलेज। इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो साइंस कहते हैं, इसमें इट इज द थियोरी दैट डिसाइडेड व्हाट कैन बी ऑब्जर्व, दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था। इट इज द थियोरी, हमारी जो वर्क प्रोसेस है, हमारी जो साइंटिफिक वे में रिसर्च कर रहे हैं, क्या ये थियोरी बिल्डिंग के तरफ है? सोशल साइंस रिसर्च में हम थियोरी बिल्डिंग कर सकते हैं क्या? ये हमारे मन में प्रयास हमेशा होना चाहिए। हमारी जो डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और इथनोग्राफिक रिसर्च है, केस स्टडी रिसर्च है, सर्वे रिसर्च है, फोकस ग्रुप का रिसर्च है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव है, और प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, ये फॉर्मुलेशन से फर्दर से, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, मेटा एनालिसिस है, ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके अंदर में हम रिसर्च कर सकते हैं। सबसे बड़ा हमारी डिफिकल्टी एसेसिंग द मेथड्स, कौन सा मेथड किस काम के लिए कहाँ तो हमारे फिट है। ये एक रिसर्चर जब तक ये स्टडी नहीं करेगा, स्टडी मीन्स आपके गाइड के साथ आप कोलैबोरेट करके, डिस्कशन करके, लाइब्रेरी में जाके, सेमिनार अटेंड करके, जैसे आप यहाँ आए हैं तो कुछ नए चीज को जानना जरूरी है, अदरवाइज उसमें आपने इतने समय क्यों वेस्ट करेंगे? आप क्यों जानना चाहते हैं इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं, इतना क्यों हुआ है? आप लोग जाके गूगल में जाके देखिए, इतना देखिए 62 लोगों ने बैठे हैं। तो मुझे खुशी इस बात में, हमारी जैसे फैमिली के कुछ आदमी मिल जाता है तो फैमिली वाले खुश हो जाते हैं। ऐसे मेरा जो कमजोरी है, मैं रिसर्च बैकग्राउंड के, तो इसीलिए मुझे मेरे परिवार के लोगों को देखने के बाद मुझे खुशी आ जाता है। तो आप लोग जाके गूगल में सर्च करिए एडवांस टेक्निक इन सोशल साइंस रिसर्च, इसमें किताब भी पढ़ा हुआ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरा ही लिखा हुआ, ये 2012 में मैंने लिखा था। तो आप इसको जाके देख सकते हैं, जान सकते हैं रिसर्च कैसे किया जा सकता है, और अच्छा क्वालिटेटिव कैसे हमारे रिसर्च क्यों इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, कैसे करने के लिए क्या होना चाहिए। मेरे उसमें कुछ पीछे आपको मिलेगा वो किताब का पीछे, जिसमें मैंने 1990 में
पहला मैंने पीएचडी करने के समय में कुछ उस समय स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर नहीं था, तो हमको बनाना पड़ता था स्टैटिस्टिक्स। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं दूसरों को भी बांट देता था। तो उसको क्या है ना, आप आसानी से जैसे 1000 बच्चों का इंफॉर्मेशन आप दिमाग में नहीं रख सकते हैं। आप 1000 लोगों का भी चढ़ा के पेन एंड पेपर में आखिरी में आपने टी टेस्ट भी लगाया कि मीन निकालना, तो आपको 2 घंटे जैसे 2-3 दिन लग जाता है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ आपको सेकंड में आप एंट्री करते जाइए, आखिर में रिजल्ट निकल जाएगा। ऐसे एनोवा एनकोवा ये सभी चीजों के मैंने सॉफ्टवेयर उसी समय में 38 सॉफ्टवेयर मैं खुद ही बनाया था। तो वो बहुत सारे लोगों का काम में आया था। जैसे हमारी रिसर्च का क्वालिटी लाने के लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना जरूरी है। अकेले किसी का काम नहीं, किसी का बस में नहीं है। जहां हम जो जितना कर सकते थे कर लिए, और आप लोग आगे बढ़िए, आगे करिए, और सभी लोगों का प्रयास में ही ये क्वालिटी इम्प्रूव हो सके होगा। और मेरा हमेशा यही प्रयास होता है, जितने साइंटिफिक वे में आप रिसर्च करोगे, उतने जितने भी लोगों को चैलेंज करें, कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और चैलेंज हमेशा फेलियर होता है इफ आपका प्रोसीजर सही है। तो इसीलिए साइंटिफिक रिसर्च में हमेशा हमेशा ध्यान रखा जाता है, हमारी जो स्टेप्स है, हम जो रिसर्च करने के लिए जो दिए हैं शुरू से, whether we must have the validity of all the research way of doing research, all the data, all the analysis, all the findings that come out with a standard format, and we must have to accept all these things. This is our way of research, and we must have to go through the steps. And experimental research, quasi experimental research, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाना भी आपके लिए दिक्कत इसीलिए होगा, जिस लोगों ने, जैसे गुरु द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन नहीं मिलता, तो अर्जुन बनने के लिए द्रोणाचार्य भी होना जरूरी है ना। और अच्छे टीचर बने और लोगों को सिखाइए, और सिखाने से क्या होता है, परफेक्शन ऑफ नॉलेज आता है। और जब परफेक्शन ऑफ नॉलेज आता है, वो एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो हमारी ये हमेशा प्रयास होना चाहिए, हो रहा है भी। पता नहीं मुझे कितना टाइम, मैं ज्यादा टाइम शायद ले लिया है, पर मुझे 12 बजे तक दिया गया था। आप थोड़ा सा कह देना, दूसरे प्रेजेंटर तैयार है तो मैं अपना विड्रॉल कर लूंगा। Yes, sir. The next speakers are ready. It's okay. तो shall I drop myself here? Please, sir, 5 minutes और 5 मिनट्स और मैं तो दिन भर वो पढ़ाने के लिए, हमारे पढ़ाना ही काम है, दिन भर के लिए भी दे देते तो हम। लेकिन अभी क्या है ना, मैं भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी एसपीएसएस एंड एमओस के ऊपर मैंने किया था, 3 दिन का मेरा भी था। तो टाइम टू टाइम ये होना चाहिए। और सबसे बड़ा है, हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एस्टेब्लिश करने के लिए हम कौन सा स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, और कौन सा हमारी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया वो किस फॉर्म में, ये तीनों चीज के ऊपर ध्यान रखिए। और आपका कभी वर्क जो है वो कभी इन्वेंट नहीं होगा, वो हमेशा वैल्यूएबल होगा। आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सबसे बड़ा हमारी डिफिकल्टीज है, हम कॉज एंड इफेक्ट क्यों ये हुआ है। रिसर्च हमेशा ही कहता है देयर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड इट। आप कुछ भी करो, इसके पीछे आपके पास तर्क होना चाहिए, और बिना तर्क में आप रिसर्च को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। रिसर्च फॉर द न्यू नॉलेज, न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, वो जो एग्जिस्टिंग है, आपको पता है मोर देन 7000 मोनालिसा के हंसी के ऊपर रिसर्च हो चुका है, वेदर शी इज लाफिंग और क्राइंग। ये जो सब टेक्निक है, ये जो सब है, वो वे ऑफ विजन ऑफ द विजनरी, देखने वाले का आंख, और देखने वाले का आंख कैसे होता है, वो इसके पास शार्प नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज है जब तक एक्वायर नहीं किए तब तो। लोग कहते हैं एनईपी 2020 में प्रावधान है, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका ड्राफ्ट, इसका इम्प्लीमेंटिंग गाइडलाइन मैंने ही लिखा हूं, तो उसमें आप देखोगे जो सबसे बड़ा स्किल यूनिवर्सिटी आ रहा है, स्किल यूनिवर्सिटी के साथ वो ग्रेडेशन, क्रेडिट, ये ट्रांसफर, क्रेडिट बैंकिंग, ये जो सब नए नए आया है, इसीलिए आपके इट इज स्टूडेंट ओरिएंटेड। और रिसर्च जो है ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ जाएगा जब आप 4th ईयर में कंप्लीट कर लोगे। वो इसमें सेपरेट, जैसे एमफिल पीएचडी पहले था, ये इंटीग्रेटेड फैशन में आ गया है। आप पढ़ते जाइए और आप बैंक के क्रेडिट करते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनते जाइए। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, और उसी को इम्प्लीमेंट जब होगा
ये स्टूडेंट ओरिएंटेड एजुकेशन हो जाएगा, उसमें कोई बैरियर फ्री है, कोई बैरियर नहीं रहेगा, सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ लर्निंग, ये सब चीज आपको मिलेगा। तो मुझे इस बात की खुशी है, हम आज एक प्लेटफॉर्म में हम सब आके एक खड़े हुए हैं और पढ़ाई लिखाई हमारी एक मकसद बन गया है। और सबसे डिफिकल्ट है जो ऑर्गेनाइजर है, जो आपने अभी इस चीज को रिकॉर्डेड फॉर्म में लिए हैं। हमारी ये जो 3 दिन का इंटरनेशनल वर्कशॉप और रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर फैकल्टीज एंड रिसर्च स्कॉलर, इसमें तो 2 ही लोग मिलेंगे, ज्यादा नहीं। और सबसे ज्यादा जो हमारे लास्ट में है, ऑर्गेनाइजर को मैंने इतने सारी स्पॉन्सरशिप जो दिए हैं, और सभी लोगों को बधाई देते हुए, और रिसर्च को कैसे साइंटिफिक वे में किया जाएगा और हमारी वर्कशॉप सक्सेस होगा, और ऑर्गेनाइजिंग 3 डेज में लास्ट में हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, इट शुड बी अकाउंटेड फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, फॉर द सेक ऑफ न्यू नॉलेज जनरेशन, फॉर द सेक ऑफ कंट्री। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही बात के साथ मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ, और धन्यवाद अगेन। Thank you so much, sir. It was a truly informative session. Social sciences are 2 subjects like history, geography, political science, civics, which were often taught right from a very young age in school. And technically these topics are such that अगर उस पे research नहीं होता, so then it would have been like non-existent, because if there are people who wouldn't have researched so much about these topics, probably we wouldn't have learned them in school. So yes, I think research is, I think, the most fundamental part of social sciences. So thank you, sir, for bringing that to light. We really Anyone can ask question if you have time and give opportunity. Otherwise, sir, you can stop. I have not given the the audience- focus on subject specification. It's a overall social science research. I talked about it, but there is the different. If you do historical research, separate segment; in the geographical research, separate segment. All are separate from each other. Language research. These are coming under the social science, but we are focusing on the overall social science research. Yes, sir. I would request the audience that if anybody has any questions for sir, you all can put it on the chat box, and I think sir would be delighted to answer them in the chat box itself. But I think because we have a time constraint, I think we should move on to the next speaker, sir. If you don't mind, is it okay? Right. Okay. So Thank you, sir. Shall I leave, sir? Madam, shall I leave? Yes. Okay, thank you very much. Yes, thank you so much, sir. Okay, so we now move on to the next speaker of the day, which is Dr. Luis Miguel Cardoso. I would request my colleague Mukul to please introduce him to everybody. So taking the conference forward, we have amongst us our second keynote speaker of the day, who is Dr. Luis Miguel Cardoso. So he's presently been the professor at Higher School of Education and Social Sciences of the Polytechnic Institute of Porto Alegre. Apart from this, he had earlier been the Deputy Director of the Master in Journalism, Communication and Cultural Media Society. He has also served as a researcher at Center for Comparative Studies and University of Lisbon and at the Polytechnic Institute of Porto Alegre. Professor Cardoso has been an excellent researcher of language, communication, sciences, cyberculture, cinema and literature, and many more. So I would now request Professor Cardoso to please take the helm of the conference in the direction of emerging trends in education and technology. Good morning and greetings from Portugal, dear colleagues and esteemed friends. It's a great pleasure to be here. It's a great honor to be here. It's a great honor to participate. So first of all, I would like to thank the organizing committee for the very kind invitation to be here. It's a great pleasure. As I said, it's a great honor, and I wish all the best for your conference and all the best for the participants to have excellent takeaways regarding the presentations that are being made, that will be made during this conference. So, my dear friends,
my dear colleagues, I'd like to start sharing a presentation regarding the topic that I chose for today's speech. So I hope it's visible for everyone. Yes, sir, it is visible. Oh, thank you. Thank you so much for confirming. Thank you. So, my dear friends, we are living in an extraordinary world with extraordinary opportunities regarding a number of great changes about education. And one of the most important changes that we have today is to analyze and to think how education and technology can create synergies, can create new opportunities to take us further regarding research, regarding teaching and learning opportunities, regarding sharing best practices, regarding opportunities to connect, to work together with different countries, with different universities, with different colleagues. So, for example, this platform, this conference, is a great example of how technology is helping us overcome barriers, overcome frontiers, and connect even beyond time, beyond space, and establish here new rules and new mindsets and sharing new points of view regarding how we can address education. First of all, understanding guidelines and frameworks that are transversal, that are common to our different countries, different continents, and then how we can adapt these guidelines, how we can adapt these frameworks to our own country, and of course, adapt them to our culture, to our educational system, and to establish here an important equilibrium between what are emerging trends in education and technology, and how we can incorporate all this in our country's educational system. So, my dear friends, let us start by understanding the horizons that we have today regarding education and technology, regarding research, teaching, and learning. So first of all, I would like to highlight a report from UNESCO called Education in a Post-COVID World, 9 Ideas for Public Action. I'm sure we all agree that the COVID-19 pandemic was truly demanding for our educational systems. It was truly demanding because the majority of our countries was not prepared to engage with technology, was not prepared to engage with online learning, was not prepared to engage with this digital transformation. So one of the lessons that we have learned from the COVID-19 experience is that we have to go digital. So we have to go digital, we have to migrate, we have to adapt, we have to establish new connections with technology, we have to establish new connections with the way how EdTech can help us improve, not just in our schools, but also in our universities, to improve our teaching methodologies in order to help our students to become better professionals, to become better persons, to become better citizens. The second pillar for this presentation would be Education 2030, the Incheon Declaration Framework for Action. Again, I'm sure we all agree that one of the most important horizons that we have nowadays is Education 2030. So this means education for all, my dear friends. This means that
we have to establish education as a national priority for all our governments, because education is the basis of society. Without education, without an educational system with quality, with teachers that are motivated, with teachers that really like their profession, with teachers that have tools, that have the ability to create pedagogical innovation in their classes, then we cannot achieve what is expected from us regarding Education 2030. I think we will get there. I think we are making great improvements in our educational systems, and I still believe that we can go further. So we can go further, for example, and again, with conferences like this one, sharing best practices, connecting, creating network opportunities, and this is an outstanding possibility to establish new pathways regarding our future. The third pillar, my friends, is the future of education and skills, Education 2030. That is a very important report from the OECD. And this report from the OECD tells us that the future of education is also the future of skills. And nowadays, skills are so important, my friends. And why? Because in our universities, we have to understand that knowledge is vital. Of course, we have to share and transmit knowledge to our students, but we must create opportunities for them to understand the need of reskilling and upskilling. And skills are so important nowadays that the majority of enterprises and corporations are now dealing with upskilling and reskilling issues. So this must be one of our priorities as well. We must give our students tools, instruments, new skills for them to address these challenges in this 21st century. And then, of course, we have research trends. Allow me to share this report, Research Futures 2.0, a new look at the drivers and the scenarios that will define the decade. So this is from Elsevier, and it is quite important for us to think about the changes we have to engage with in our universities, in our schools, to connect research, teaching, and learning. Because all these are together in the same objective, that is, again, education for all. So we need very good teachers, we need extraordinary teachers, we need teachers that are engaged, we need teachers that are up to date, we need teachers that connect knowledge with these new skills. So this takes us to the fifth pillar of this presentation, that is the so-called Higher Education Landscape 2030. And my friends, how can we describe this landscape by 2030? So we truly hope that this landscape by 2030 means that, first of all, students are at the core, at the heart of our classrooms. We will have 100% student-centered classrooms. And this is our main goal, because our children, our students, must be the ones responsible for discovering the world, for discovering knowledge. And we as teachers will be guiding them. We as teachers will be always with our students. We'll be always giving them notions, ideas, and hints about how to choose information, for example, how to choose different platforms, how to analyze data, how to collect data. So by connecting these 5 pillars, we understand
some of the most important horizons that we have nowadays regarding our common future. So why is this transformation, this migration regarding the digital so important, my friends? Well, again, it all began during the last years due to the COVID-19 pandemic. I'm sure that you noticed that we had 3 stages regarding digital transformation of universities. So the first stage was teaching content digitalization. And then we had stage 2, teaching process digitalization. And of course, we had stage 3, teaching management digitalization. So let us highlight here the keywords. This means teaching content digitalization, teaching process digitalization, and teaching management. So teaching content, teaching process, teaching management. All this is connected, of course. So during the COVID, we learned that we had to go digital, and we had to go digital very fast. So we engaged with this migration, with this digital migration, and we all understood that we have to go ahead by transforming our universities, by transforming our schools, not just with hardware, not just with software, but also giving our teachers the skills to be up to date regarding digital technology, for example, digital literacy. And literacies are so important in this century, my dear friends. And how important is education and technology nowadays? Let me share just a few numbers so that you may understand how governments are addressing all this. So one of the conclusions of one of the recent studies gives us this idea. EdTech spend will nearly double in the next 5 years. For example, in 2020, we had 3.6% of digital spend. This is more or less 227 billion US dollars. By 2025, we will have 5.2% digital spend. This means more or less 404 billion US dollars. So we're talking here about an increase of 12.2% regarding EdTech spend in our educational systems. So this allows us to think that if we want education to be our priority, then we have to spend more money in our educational systems. Of course, this all belongs to our governments, but I'm also sure that our governments understand the need to give educational systems, to give our schools, to give our universities, to give our teachers everything that is necessary to get to our students, to engage our students, so that our students can be one day, when joining the labor market, great professionals. So why are we now connecting EdTech as never before? For example, let's take a look at last year's top 10 education technology trends and innovations. This is a portrait that is created from a study that included 2,866 startups and emerging companies that were analyzed. And it was tried to summarize what were the most important trends during 2022. And these trends still continue, very important today in 2023, and will be again very important in 24 and 25. So we're talking about, for example, immersive learning, artificial intelligence, e-learning,
gamified learning, gamification, so important nowadays, big data and analytics, personalized learning, blockchain, cloud computing, video-assisted learning, and the so-called Internet of Things. So these technology trends regarding education are truly the basis for the next decade. And here we have a list of some of the most important challenges that we have today. And we have to address these challenges because education is changing, our world is changing, our society is changing, and we have to adapt. We have to evolve, we have to be flexible. So the impact of top 10 education technology trends and innovations in 2022 can lead us to understand in percentage the impact of these education technology trends. For example, nowadays, I'm sure that we can see in our schools, in our universities, more immersive learning. At least in 2022, at least 22% of our teaching methodologies were regarding immersive learning. And then, of course, we have the use of AI with at least 60%, and it is growing exponentially. Again, with e-learning. And e-learning was, again, one of the most lessons we have learned from the COVID-19 pandemic. And of course, we have gamified learning. Gamification is so important. And then we have personalized learning, big data and analytics, and the other ones. So personalized learning is all about understanding that our classes are different. Our students are different. And we have to be flexible. We have to understand that our classes have different students with different characteristics, with different needs. So we need help to understand these needs. We need help to understand how to select the best teaching and learning opportunities, how to select tools. And this is where artificial intelligence can help us a lot. Now I'm sharing a policy report from the European Commission entitled The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching and Education. And let me just say, my dear colleagues and my dear friends, that applications of artificial intelligence in education are spreading. Of course, nowadays, we already have AI as virtual facilitators, as creators of smart content, with automated grader activities, for example, with data accumulation. And our campus are now changing. So we have chat campus, we have campus with the help of chatbots. We have adaptive learning, we have proctoring, we have chatbots all around us, and we have personalized learning. And when we connect adaptive learning with personalized learning, we are now getting to one of the most important trends in education nowadays. So education must be flexible, must be able to adapt, must be able to create opportunities for all in our classrooms. And of course, we have now huge debates regarding AI in education. But I would like to share these words from Professor Lukyun from New York University. And he tells us, our intelligence is what makes us human. And AI is an extension of that quality. So let us think that AI is here to help us. Let's think that AI is here to create new opportunities in our classrooms. I'm sure our classrooms will be quite different in the next years to come, the next decade. We'll be incorporating all sorts of artificial intelligence machinery, devices, and this does not mean that we as teachers are being threatened by AI.
This means that we have to adapt and incorporate AI in our classrooms. For example, my friends, we are now incorporating social media. We are now incorporating cinema. We are now incorporating audiovisual. We are now incorporating information from different platforms. We are now using online, blended and hybrid teaching and learning experiences. So we are flexible. So we can adapt, we can evolve. And we will evolve because the roles of AI in education are so important. For example, AI in education means that AI devices, robots, namely in our classrooms, for example, may help us with automated tasks, may help us with generation of smart content, with course improvement, analyzing classroom weaknesses, analyzing, for example, if this student or that student is not engaging, and we try to understand how we can get to these students and help them engage in a more interesting way. So AI will also be responsible for creating universal access to all students using this key idea that is educating the educator. So we'll be evolving as well as teachers, absolutely. So we'll be having increased participation. We'll be having virtual facilitation with AI. We'll be having more personalized education. We'll be having a connection between inside and outside the classroom teaching and learning experiences. We will have AI-powered tutors. We will have grading automation, for example. All this is happening now. And it's happening now because our goal for 2030 is the SDG for education. So we are now addressing student-facing AI to enable adaptive lifelong learning. We are now teacher-facing AI to augment teachers' capabilities. We have system-facing AI to enhance education management in order to transform education and learning. How? By access to education, lifelong learning companions, collaborative learning, student forum monitoring, adaptive and continuous assessment, the so-called dual teacher model. And if you can summarize all this, let us just highlight the words of Andrei Azula, UNESCO Director General. Artificial intelligence can be a great opportunity to accelerate the achievement of sustainable development goals. And any technology revolution, we all agree on this, leads to new imbalances that we must anticipate. So, of course, we will embrace new technologies, we will embrace AI, but we also have to address a lot of issues regarding AI, namely how to use AI, how AI can help us, and sometimes we have to avoid some biases regarding AI. We have to create codes of ethics regarding AI, and these are all challenges for this 21st century. So when we think about how to define our new horizons, again, we must go through education in a post-COVID world, 9 ideas for public action. And some of these ideas are truly connected with education and technology. For example, free and open source technologies for teachers and students. This is absolutely vital for our educational systems, my dear friends, because we have to make free and open source technologies available to teachers and students, because if we cannot give our teachers and our students these open source technologies, then we cannot go ahead with online learning, we cannot go ahead with hybrid models of education and technology. So open educational resources and open access digital tools must be supported.
And education cannot thrive with ready-made content built out of space and out of human relationships between teachers and students. This is why the relationship between students and teachers is vital for the success of this migration to digital world, this digital era in this 21st century. And my friends, again, why are we changing our mindset? Because skills that are required in the labor market are also changing. Let us just compare, for example, what happened in 2015 with what happened in 2020. So in 2015, the number one top 10 skill was complex problem solving. It still is complex problem solving in 2020. And by 2027, complex problem solving will be one of the key elements for everyone. So everyone must strive to get a great approach, an interactive approach regarding complex problem solving. Because again, this is one of the most important lessons we have learned from the COVID-19 experience. And then we can compare how these top 10 skills were important in 2015 and were important in 2020. And what are our conclusions? Well, first of all, some skills that were important in 2015 were no longer important in 2020. And in 2020, we had new important skills. For example, emotional intelligence, for example, cognitive flexibility. So these are very interesting changes that we have to analyze and we have to incorporate in our schools, in our universities, in our syllabus, in our curriculum. And these changes, of course, led to this report from the World Economic Forum in 2022 about skills outlook. And when we compare the skills that are growing with the skills that are declining, let us just highlight those who are growing, which are growing. We have analytical thinking and innovation. We have active learning and learning strategies. We have creativity, originality, and initiative. We have technology design and programming. We have critical thinking and analysis. We have complex problem solving. We have leadership and social influence. We have emotional intelligence. We have reasoning, problem solving, and ideation. We have systems analysis and evaluation. So, my friends, this does not mean that, for example, manual dexterity, endurance, and precision, or memory, verbal, auditory, and spatial abilities will disappear. No, not at all. This means that we have to create an equilibrium between those skills that are declining with the skills that are growing, because all these skills are important for our students and they are truly important for us as well. So we have to establish a new equilibrium regarding these skills. And again, why do we have to change? Because research methodologies are also changing. Allow me to share some thoughts from a study by Veer published in April 2022, entitled Research Futures 2.0, a new look at the drivers and scenarios that will define the decade. So we have here the so-called key areas of change. So first of all, big data is becoming the lifeblood of almost all research. Big data can be used throughout the research cycle, for example, to understand research processes, analyze and share data sets, link interactive articles to data sets, and create efficiency. Artificial intelligence and machine learning tools are changing the shape of science. AI tools already in development can help us increase the role of AI, but tension, of course, will develop around it, how it is deployed. And we're not talking just about ethics, but about the balance between human and machine, as well as a potential for bias
and manipulation. Also, key areas of change include augmented reality and virtual reality as well, and they will become the main learning tools for many institutions. AR and VR have the potential to increase their contribution to research and education for the following reasons. For example, to enable scientific experiments that are not easily accomplished in the real world by bringing abstract knowledge and concepts to life. So, my friends, conclusions regarding these great changes in education and technology, in research, knowledge, skills, and literacy. So, first of all, technologies such as the Internet of Things, this is responsible for much of the digital information generated, big data, artificial intelligence, and robots have boosted the response to the pandemic while accelerating development in these areas. Researchers' dependence on technology, including AI, will increase, and 52% think that they will become more dependent, and in the next 2 to 5 years, this dependence will increase. The post-pandemic scenario will drive the adoption of AR and VR in healthcare and education, for example. So, my dear friends, these thoughts that I've just shared are a portrait of how we can engage in this 21st century regarding edtech, regarding education and technology, regarding how to connect research, knowledge, skills, values, principles, all this connected in our syllabus, all this connected in our curriculum, to create a curriculum that is flexible, that can adapt, that can create opportunities to respond to the labor market needs, so that our students are well prepared, so that our students will be great professionals, so that our students will be great persons. They will have values, they will have principles, skills, literacies to be extraordinary citizens. And we all want the best for our countries, and the best for our countries is to support education. The best for our countries is to connect. The best for our countries to different countries, different schools, different opportunities in university is truly, truly the answer is connect, connect, go global, use these platforms, use these conferences to create new synergies, to exchange point of views with different colleagues with different perspectives, and to have unity, to have strength, to have mind in these changes. So, my dear friends, let's be optimistic regarding this 21st century. Let's go ahead. Let's create new possibilities for our students and make things better for the next generations. Thank you, my dear friends. Thank you, my dear colleagues, for having me here. Thank you so much, sir. Truly, I mean, it was such an informative and inspiring session that, we are living and we are living, breathing examples of the subject that you touched today. Education, if you see in a perspective, is also a kind of a research, because the students and the teachers are both doing research in order to gain knowledge, and that's what we call learning, I guess. And with the advent of the internet, education and research is a lot more easier, and we can access great speakers, great scholars, and their published work and their speeches at a lot more in a lot more easier manner, I guess. So thank you so much, sir, for being an example of the same. It was really a pleasure to listen to you today. So the next speaker of the day is Dr. Vidyapeeth Shanbag, sir. I request Mukul to please introduce him to everybody. Thank you. So moving the conference forward, I would like to say that in the pursuit of research excellence,
Lay the bricks of dedication, cemented by the guidance of your research guide. Coming up next, we have our eminent speaker, Dr. Virendra Shanbhog. He is the principal of the New English PU College, Bhatkal University, Karnataka, and a proud and honorary advisory board member of Social Sciences Management and Welfare Association. So, reserving time for the speaker, I would now request Dr. Shanbhog to please take over the symposium. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks, Mukul, for introducing me. I come from coastal Karnataka, which is near Goa, where there are beautiful beaches. So, Mukul can visit us. Am I audible? Yes, sir, you're Yes. audible. Yeah, thank you, madam. My screen is visible. Yes, sir, it is. Yeah, okay. At the outset, I would like to express my sincere gratitude to Bharati Vidyapeeth, New Law College, Pune, and my favorite, Social Science and Management Welfare Association, Jabalpur, for organizing such a wonderful workshop on research methodology for faculties and research scholars. What I felt is I will be speaking with research scholars who will come to me and ask me, sir, tell me the topic title on which I can do the research. So they come with degree, basic degree is masters, and they ask me the title. They ask me how to prepare. They ask me what and all objectives can be framed. They ask me the methodology. They ask me the literature review. So it has become a habit to me to tell them that go back again, work on and come. So I thought that let me make a presentation on that, so which the researchers can get an idea before going to the guide. So if uh, the 66 participants to whom I can see now, it is around 70 participants. If you are the if you have already completed PhD, I feel my presentation will be waste to you people. If you are interested to do research, then it is really, I want you people to take a pen and pad and make a points. So next 15 to 20 minutes, I will be speaking to you people, because now plenty of information is available. Google is there, and uh, uh, we are in the artificial intelligence era. So information collecting will not be that difficult. So we can get resources from n number of sources. Only the difficulty of us is preparation. How we are preparing ourselves to do research. So my first point is uh, about research proposal. Before we go to guide, we will have to prepare a small research proposal where we can keep what is the idea of my research, what are the objectives which I want to uh, in, uh, add in my research, methodology, what I'm going to do, potential contribution to the field. So the society, like how my research can help to the society, contribute to the society. So this will impress the guide that the particular researcher has done lots of study and he has come. The second point is background research. Especially my focus is about literature review. If I want to do research on food processing industry, or if I want to do research on financial viability, what is that I know about a particular topic? What is that already research is done? What is the gap? And what is the scope for research? If I know all these things before I go to guide, the guide will be very much impressed knowing the knowledge of a particular researcher. Generally, what happens, we go to guide and ask, so please give me the topic, please give me the title. And then we go and refer some other thesis where we can get number of ideas for what is my own, what is genuine to be thought. So
is Virendra sir connected? Sir, can you hear us? Hello, madam. Yes, sir. Okay. Sir, is it fine if your presentation is not getting uploaded? You can continue with the explanation part. Okay, madam, I'm audible to you, right? Yeah, absolutely clear, sir. Sorry, there was a network problem, I think. No problem, sir. Yeah. Then I was speaking about research question, where we will have, before going to the guide, we will have to frame the questions where we will think about the title, which title we can plan. We can think about the objectives, at least 3 to 4 objectives on the basis of which we can continue the research. And then I want to focus on number 4, methodology consideration. What is the methodology which I can plan for? If you Google, there are many, like experimental research, quantitative research, qualitative research, case study research, action research, ethnographic research, survey research, grounded research, content research analysis, historical research. So these are the different research areas or methodologies which we can plan, which suits to our title, which suits to our objective that is to be thought of. Next is feasibility assessment. Before we select the area, we will have to see that the feasibility of data, feasibility of material, the area in which we are looking for. Can we get the data? Can we do survey? Can we prepare the questionnaire? Or the plenty of resources available or not? Will I be able to do the literature review? So these are the key points which we will have to see. If we plan such a title where the data is not available, where the literature is not available, then it becomes very difficult. The doctorate becomes a job of 10 years, where we cannot give such a long years to complete our PhD. So feasibility of data to be properly planned. The next point is timeline and milestones. We will have to plan for the completion of PhD when we start for PhD. If we don't keep proper timeline, if we don't plan for publications, if we don't plan for presentations, then it becomes very difficult. So before we go to guide, let us make timeline for all these things. Like, this is the way how I will start my research, and here I end. Then expectations and goals. Let us have very clear expectations from the guide too, that how many times we are going to meet guide, in a month or in a week, or how we are meeting it. Then when can I complete my research? When can I submit my thesis? When I am going to present in conferences? So these are all to be planned properly. Then availability and communication. Sometimes the university will be allocating such guides which will be far from our place. So meeting guide becomes again difficult, as where again ego to be considered. So availability for discussion to be seen. That is the another point. And mode of communication, like now because of virtual, can we access that opportunity to be thought again? Then I want you people to make a list of doubts and queries what you will be having while you go to guide to discussion. So if you go with number of questions, the guide will be very happy to know that the particular research scholar has done lots of work, and he will be eager to answer you. If generally what happens, people come and sit and they will be interested to guide to tell about the topic which they want to choose. So such things are not possible, which will not be practically possible. So I want the researcher will have to make queries, will have to make a list of questions, so which guide will be answering. Then there should be professionalism. Respect the time of guide. If the guide has given 10 o'clock, means I want researcher to reach before 10, 9:55 dot will be the nice gesture. And respect the expertise of the guide. Don't show your smartness in front of guide, because guide will be knowing many things. So you cannot tell that, you cannot pretend in such a way that I know better than guide.
Then be open to constructive criticism. When you have done lots of work and you are presenting it to guide, and if guide says that this is nothing, then you will have to accept it. You cannot show the gesture of dissatisfaction where professionalism needs to be maintained. Then enthusiasm and passion. When this PhD should not be just a qualification, it should be a passion. I want researchers to be always be positive and but to keep always mind open. There is a lots of scope to learn and improve. Personal development of goals, where we all want to make a career. It's not that I completed my PhD. So if you complete a PhD at the age of 50, then it becomes only qualification. I want PhD to help to gain a career, to get a job, or to get a higher positions. So personal goals to be set, and that this is the age, this is the year where I will complete my PhD. So a PhD should help us to earn money, to have a respect in the society, to go to higher positions. So that all possible when we have goals. So this much I wanted to tell you. I thank Vishwakarma sir and Brajesh sir for giving me this opportunity. I have some other commitments, so I wanted to focus on methodology of research, but due to the shortage of time, I could not do it. But only thing is, I want to tell all the research scholars that PhD should be a passion, cannot be just a qualification. If you have real passion, you can prepare do wonders, because information is plenty. Lots of information is available now. It is not like earlier years. Now, if you really plan, if you have that eagerness to do research, you can really complete PhD and plan the way how I inform now. Then really PhD will not be that difficult. Thank you so much for listening me. Have a nice day. Thank you very much. Thank you so much, sir. It is always a pleasure when you grace this occasion. I think it is my third year of this conference, and it is always a pleasure to listen from you, because it is always very crisp and precise. So thank you so much, sir. Despite your technical difficulties, I think me and the audience, we managed to grasp so much of your knowledge, and it'll be a pleasure if you keep connecting with us like that. So thank you so much Thank you. for gracing this occasion. Yeah. We now move on to the next speaker of the day, which is Dr. Firdaus Alam. I request Mukul to please introduce them to the conference. Thank you. Okay. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Thank you very much, Anaya Ajit, for your introduction. I am Firdaus from University Utara, Malaysia. So, can you see my slide? No, sir, not yet. Yes, I think now it is visible. Thank you, sir. Okay, thank you very much for the conference, a 3-day research methodology conference workshop, the committee for this kind of nice event to share all the academic knowledge from seniors to juniors. Students can learn so many things from seniors or colleagues. Okay, today I will discuss something about how to respond the reviewers' critique and reviews during academic writings.
Okay, academic writings, those we are in the academic profession, it is a very common to write academic publications for our research articles, for our sharing our knowledge to academic community. So this is very important. So I will discuss one part only, not only whole thing, because the previous presenter already discussed about so many issues, cover up everything, I hope. So this is the process of publication usually we have to follow. So can you see this slide, process of publication? So the author submitted their manuscript to the journal. We know after scrutinizing so many things, which journal is very related or relevant to our research, then we submit accordingly to the journal. So first, the editor or preliminary editor or assistant editor, they assess preliminary. We call it DEX assessment. So they check scope and quality for initial process. So if the editor satisfied as it is a scope, very relevant scope to their journal, and quality also quite okay, then they can send to the reviewer. So minimum 2 reviewers to maximum no limit actually. Nowadays I can see even 12 reviewer also they can send. So minimum 2 reviewer, usually most of journals they send to the review the articles, and then after reviewer give some comments. Reviewer give some comments. Most of time we can get minor or major revision. Very few times we can get rejected by the reviewer comments if the reviewer think this is not appropriate or quality or any other things. So in that case, how after get the minor or major revision, how we respond to the reviewer to satisfy them or improve the quality of the manuscript effectively. So we go for this. Usually the revision, before revision, sometimes the reviewer give minor or major comments. Most time they give minor or major correction or improvement. Sometimes they reject. So usually the reviewer states the content, lack of novelty, unrealistic claim, no timely research, poor presentation, lack of critical interpretation of result can cause rejection. Can cause the rejection. So paper need some revision, whether it is minor or major is the very common thing. So let's see how we deal with this kind of feedback. The reviewer, they are supporting us. Actually, they are supporting to the author to improve their paper gradually to meet the journal's level. So we have to think about that. The reviewer, they are supporting us. They are not our enemy, or they are not try to reject our paper. Actually, they try to support us to improve our paper. Indeed, it will be published. So first thing is express gratitude.
We should express our gratitude, start by thanking the reviewers for their time and providing valuable feedback. Show appreciation for their effort, because most of time the reviewer expend their time voluntarily. They are not getting any benefit to review your paper. So show respect, show the due respect to them. Use polite language throughout your response. Then stay humble. Remember that the reviewer process is an opportunity for growth. Be open to construct criticism. So you have to accept all kind of criticism to improve your paper. Okay, organize your response. Address each comment. Organize your response by addressing each comment individually. This make it easier for reviewer to follow. Then use a clear structure. Use a structure format like a table, including the reviewer's comment and your response beside this. So what is their comment, and according to your response. Beside, they can make it clear, easy to read. Don't forget the detail. Make sure you address all comment, however minor. Missing one small detail could hold your paper back. So if your paper back to the second, third response, second or third review comments, it will take time. It will take time. Though we know one good journal, they take 6 months to 1 year, very minimum time to take all the review process for publication. Clarify misunderstandings, provide additional context, explain your intention. So if a reviewer has misunderstood your point, politely provide additional context to clear up any confusion which is arise. If you know that a comment is based on a misunderstanding, provide an explanation of what you indeed or intended. So take the time to help the reviewers understand your writing better, if it will pay off. Explain and revise according to the criticism. We should revise. For criticism, explain your choice. If a criticism relates to the work's content or methodology, explain and define your choice. Don't be afraid to challenge criticism. What doesn't have a bias, doesn't have a basis in research or logic. So for suggestion, consider the feedback. For both, revamp the introduction. Be open to your mistake. Be honest about your error and take the necessary steps for improve them. So always we should remember that reviewer is supporting us to improve our paper to publish in the respective journal. Reference literature. We should support with evidence. If a reviewer disagrees with a point of your paper, back up your argument with reference to previous research. So literature can support us. That previous researcher also can get similar kind of research or result with this kind of model or this kind of analysis. We can make evidence with support. Cite relevant work, strengthen your argument, and can help to win over reviewers with opposing views. Data always wins, so support your points with evidence such as data tables, graphs, and other reliable sources. Be specific in your revisions. If you agree to make changes based on reviewer suggestion, clearly specify the modification you have made in the revised manuscript. Use line number or section heading to refer to the exact location of the changes. Sometimes we use different color, which we made a different color, easy to
get the differences after and before changes. Make clear changes. Attention to detail in key. If reviewers have asked for changes to be made, ensure they are made precisely in the section pointed out. Double check that you have promptly implemented all requested changes. Check your document thoroughly for any kind of error. Stay professional. Make sure your tone remain polite and professional, even if you strongly disagree with a reviewer's comment. Never can tone up. You should tone down. Respect your reviewers. Don't get defensive or confrontational. We should avoid some word which can attack. Avoid negative words like wrong or mistaken. Instead, stick to evidence and logic to support your points. Stay focused. Remember that you are trying to improve your paper quality. Don't let personal feelings affect your work. So we should focus professionalism. Follow journal guidelines. We know every journal, they have their own format and guidelines. Journal to journal, it's different. Read the journal guidelines before you finally submit it. Ensure that you revise manuscript compiles with the journal's formatting guidelines. These include word limits, citation style or reference style, and any other specification. So failure to comply sometimes delay the procedure of publication. Check and check again, ensuring compliance with the journal requirements, which is essential for the publication. Formatting is key. Incorrect formatting can make your paper difficult to read and damage your credibility with reviewers. Pay extra attention to formatting detail. Sometimes we focus more on context rather than the formatting, but formatting also very important part for different publisher in different style they follow. We should focus. Seek clarification. When in doubt, clarify reviewer comments. If you find a comments not clear to you, don't hesitate to reach out to the reviewer. Seek your clarification as soon as possible so that they can properly address their concern regarding this unclear information or comments. When the editor is there, use the editor as a resource. Ask the editor to act as an intermediary between you and reviewers for further clarity. Sometimes when we submit, there are two concern, one for editor's concern, another for reviewers' concern. So we can ask editor also in different way that this is the revision according to the reviewer. Please consider our work. If you need further clarification, further review, so welcome. So you have to clear about this. Clear communication to avoid misunderstanding. So clear communication with reviewers and editor can help to avoid misunderstanding. Sometimes as a reviewer, we can see that the editor also asks some comments, which is only for editors, and some only for the authors. So we should comment different way, which is concerned about editors and which one is concerned to the authors only. We should focus on it. Ask for an extension if needed. So if you feel that, okay, your time, maybe you got 1 month to change additional revision and submit. So if you feel it is not enough time, you can ask additional time. Acknowledge your latent, be respectful if
you need additional time to make revision, politely ask to the editor for an extension. So most of time we get additional time as our requested. So be realistic, reasonable expectation, set a reasonable deadline. So sometime we need 2 month, 3 month extension, not 1 year, 2 years. It should be reasonable according to your work, which is not reasonable, sometimes is fishy, and it is not good for the editor to get something suspect. Always use polite language, which I already mentioned. Editors are busy, and it's important to remember that accommodating your needs could impact their schedule. So make it easy for them to work with you. So sometimes the author always asking editor, email editor frequently, what is our status? So you should have patience about this. So it could be make positive impact. Okay, then the last one is proofread before your submission. So we must have a proofread as we are not native English speaker. So we should have taking help with the proofread, those who are very expert to do this. Before submitting, review your response before you send it back. Check your grammatical error, spelling mistakes, and typos. Sometimes the rhythm is not good, so we should check about this. So sometimes we need copy editing if our writing up is not so good. Check formatting. Be your own critic. Finally, take the time to assess your work like it's not yours. Maybe your paper you can check as you are a reviewer. So how it will be if this paper written by someone else, how you react. Try to pick it apart for grammar, spelling, substance. Ensure that any response you submit is polished, professional, and make good sense. So this is the thing we can respond to reviewer critics and reviews to satisfy them. Sometimes reviewers need 2 or 3 times response. After first response, reviewer not satisfied, then they give additional critiques or reviews. So you do it again patiently. Maybe third time you can get it until they satisfy. So we should have enough patience. We should respect all those critics and comments for our improvement. So before, when you first time you submit your manuscript and after publish your manuscript, you can see a tremendous changes. A tremendous changes happen during the review process. During the review process, huge changes. Sometimes you cannot figure out this is written by you or others. Okay, so that's all for today. Thank you very much for listening my lecture today. So if you have any questions, welcome. Thank you so much, sir. Audience, if you have any questions, please ask them in the chat box itself, and I think sir will be willing to answer them there itself. Thank you so much, sir, for such a detailed analysis of writing a research paper to like publishing it on a platform. I think till now, whatever research papers I have published, if somebody was there to explain these kind of things to me in this detail, I think I would have done much better than what I did today. But I guess your research and your presentation will be helpful to me in the future. So thank you so much, sir, for explaining not just the theoretical aspect of it, but also the mental. Because what happens is that, as students who are still stepping into the world of research, we often tend to, lose heart or, feel bad if
our research papers are not accepted, or researchers or reviewers find lacunae in our publications or whatever. So thank you so much, sir. I will definitely incorporate this into my practical life, and we really, really appreciate it. And I guess if it is possible for you to share your PPT with the audience also, that would be a great thing, either in the chat box or on the WhatsApp group or whatever Brajesh sir might feel comfortable to do. So thank you so much, sir. It's my pleasure to share with you. I hope the student can get help. I Yes, will sir, share definitely. the link to the chat box. Sure, no problem. Yes, Thank you very much thank you again, so much, sir. everyone. For those people, including me, who could not listen to Sir's introduction, due to technical difficulties, may I just say that Sir is a part of School of Business Management, University Uttara, Malaysia, and also he is an advisory board member of International Social Science and Management Welfare Association. So thank you so much, sir, for gracing this occasion. We really appreciate it. Thank you very much. I already share in the chat box the Okay, link. thank you. Thank you so much, sir. Welcome. My pleasure. We now move on to the next speaker of the day, which is Dr. Ujwala Bendai, ma'am. I request Mukul to introduce her to the audience. Thank you. Proceeding ahead in the conference, I would like to say that in the realm of words, a well-crafted report is a symphony of information and insight, resonating with clarity and purpose. So we have amongst ourselves Dr. Ujwala Bendale, ma'am. Dr. Ujwala Bendale is a law graduate from Symbiosis Society Law College, Pune, in the year 1999 with Masters in Law from Pune University in 2001 and a doctorate in Philosophy of Law in 2006 in Property Laws from Bharati Vidyapeeth Deemed University, Pune. She has been teaching property law since 2001 along with constitutional law, law of torts, research methodology, and international human rights. Currently, she has been appointed as the Dean Faculty of Law, Bharati Vidyapeeth Deemed University, Pune. She is a recipient of Best Teacher Award in 2003, 2014, and 2015. And she is a member of Academic Council of BVDU's second highest post in Bharati Vidyapeeth University and is a member of several cells in Bharati Vidyapeeth University. Internationally also, she is a distinguished member of International Council of Jurists, London, 2017 to 2021, and has visited Boston, US in 2010 for Harvard Model United Nations as legal advisor with students representing Seychelles. Dr. Bendale has publications in various national and international journals. She has organized, attended, and coordinated various workshops and seminars, and this being one of them. So now I would request Dr. Bendale, ma'am, to please address the audience on the concept of report writing. Thank you, Mukul. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, clear? Yeah. Mukul, can you load my PPT? Hello? Yes, ma'am. Yes, Just a ma'am. second. Yes. Yeah. Okay, can you all see it properly and can I go ahead? Yes, ma'am. Please go ahead. Yeah. So good afternoon to everyone. And here I am today presenting on the last point of research, and that is report writing. Next slide, please. If you allow me, I would really go towards explaining the major steps of research first. And besides not taking more of time, I'll proceed with report writing. Second slide, Mukul. Mukul. Yes, ma'am. He's Yeah, doing please that. go to the second slide.
Is it possible or should I go ahead? Yeah. So, dear all, last 3 days, you all are learning different various topics from these 8 points which I have on my slide. And let me tell you, there are major steps in research. Firstly, the formulation of research problem. Secondly, review of literature. Thirdly, formulation of hypothesis. Then comes research design. And then comes data collection. After that is research methodology. And the next 7th step is analysis and interpretation. And last step comes is report writing, which is my topic for the day and the ending for this 3 days workshop. Let me tell you, each step is connected with each other. We cannot study any of the step exclusively or deleting any of the step. If any researcher goes ahead, I'll tell you, you will have a you will have some negative points or demerits in your thesis. So kindly keep it in mind that every step of research is connected with one another. They all are in connection with each other. So step 1 is connected with step 8, 8 is connected to 2, and 2 is connected to 3, 4, 5, 6, and 7. So you cannot undo a research, or you cannot do a research by skipping any of these particular steps. So might as well in the last 2.5 days you have studied all the first 7 steps, and now comes the report writing. Next slide, please. Let me begin with the next slide, and let me begin with this topic with the words of Mr. Byrne. He says, extremely valuable and interesting practical work may be spoiled at the last minute by a student or a researcher who is not able to communicate the result easily and properly, or scientifically and systematically, which is what I'm wanting to add to Mr. Byrne's statement. So I would like to say, a research without a report can be considered as a house without a roof. And report writing, I'm really very sure, and every scholar over here will agree with me, that report writing has a pivotal position in research. And that is the reason why, let me come to the objectives of writing research report. The very first objective is the investigator clarifies and systemizes his work. When I say clarifies and systemizes his work, I mean he transmits the knowledge, whichever knowledge he's having, he transmits the knowledge of whatever he has researched to the audience. And that transmission has to be done with proper utilization of the resources invested into. The second objective